Hello bachcho, let's see the question. The question says ratio of number of oxygen atoms in CH3PO4 whole 2 and H3PO4 if both contain same number of P atom is. अगर ये जो कंपाउंड हमें दिए गए हैं CH3PO4 whole 2 and H3PO4 में सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होता है, देन ये जो दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट हुए ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 3:4, 4:3, 2:3 और 3:2. Key concept is presence of number of oxygen atom कितना होगा, presence of number of oxygen atom, कितने number of oxygen atom कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे. Oxygen atom. In the case of CH3PO4 whole 2, one molecule of CH3PO4 whole 2 contains two number of P atom, phosphorus atom, and one molecule of H3PO3 में कितने phosphorus atom present होता है, one number of phosphorus atom. But हमें दिया गया है if both contain same number of phosphorus atom, that means हम लेंगे 0.5 molecule of CH3PO4 whole 2 अगर हम ले लेते हैं, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उसमें प्रेजेंट होगा वन नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, जैसे कि इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट हो सकते हैं. दैट मीन्स this will be equal to number of phosphorus atoms present in H3PO. So, hence number of oxygen atom in one molecule of CH3PO4 whole 2 is कितना हुआ, O4 with 2 that is 8. So for 0.5 molecules of CH3PO4 whole 2 will be 0.5 multiplied with 8 that is equal to 4. So half of the molecules में present होगा 4 number of oxygen atom, and in the case of H3PO3 number of oxygen atoms in H3PO3 is 3. So if we take the ratio of those, so the ratio will be 4:3 if we compare CH3PO4 and H3PO3. So this is the ratio of number of oxygen atom present in the given compound. So 4:3 is given in which option? Option B. I hope you have understood it well. All the best.